Hi scholars, welcome to VARSHA'S education. Today we are going to start with our second chapter, that is business activities. So let's get started. So that is our second chapter, business activity. So what do you mean by business? Business एक ऐसे institution है that is organized and operated to provide goods and service to society. सोसाइटी के लिए वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, बट एज अ बिजनेस सिर्फ प्राइवेट गेन, उसे प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स अ बिजनेस. सो बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी. So what do you mean by characteristics of business? So we will see characteristics of business. So first is sales, transfer or exchange. अभी हर एक बिजनेस में ट्रांसफर, सेल्स एंड एक्सचेंज तो होता ही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ऐसे ही नहीं, उसके लिए प्रॉफिट बिजनेस देखी गई. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस, दैट इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सेकेंड इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. सो गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, सो फॉर सेलिंग पर्पस, सेलिंग टू कंज्यूमर. सो गुड्स में भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकते, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स. एंड प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स दैट इज मशीनरीज, जो कुछ भी इंडस्ट्री यूज करेगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स. So first is sales, transfer or exchange. Second is dealing in goods and service, and next is regular dealings. बिजनेस ऐसे नहीं कि बाबा फर्स्ट टाइम एक ही बार में हम लोगों ने परचेज कर लिया सो हो गया बिजनेस. नो, नॉट लाइक दैट. बिजनेस इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस. एक सिंगल ट्रांजेक्शन में बिजनेस नहीं होता, इट इन्वॉल्व्स अ डीलिंग. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस है, बिजनेस इज नॉट इन चैरिटी, सो बिजनेस में प्रॉफिट तो होगा ही होगा. वो बिजनेस में देखेगा ही कि हमें प्रॉफिट कैसे करना है, टू अर्न मनी, कुछ तो एक्वायर करना है. सो बिजनेस इसके लिए इट्स अ प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस अ प्रॉफिट मोटिव. नेक्स्ट इज रिस्क. हर एक बिजनेस में रिस्क है, अप्स एंड डाउन्स तो होगा ही बिजनेस में. सो रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस. लास्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. अभी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस ऐसे प्रोडक्शन करता है जो कुछ भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई दे. सो ही इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. सो लास्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स इज आल्सो नोन एज, जो हमने सेकेंड पॉइंट में देखा यहाँ पे, it's also known as producer goods. See, this is producer goods. Capital goods is also known as producer goods. जो कुछ भी business produce करता है goods, that can be used for production purpose. For example, machinery, tools, that is known as capital goods. Next is consumer goods. Consumer goods means directly that can be used by a consumer, like toothpaste, books, and all that. That is known as consumer goods. Now, what do you mean by service sector? Transportation, warehousing, insurance, banking, these all are service sector. Service sector means क्या होता है, जो कुछ भी हमें सर्विस देगा, that is known as service sectors. अभी transportation is also a type of a service. Warehousing, जहाँ पे हम लोग goods store कर सकते हैं, that is also one type of a service. So these are the example of service sector. These are the example of tertiary industries. अभी ये tertiary industries क्या होते हैं, that we will see in our next lecture. So all these are collectively known as service sector. Now packaging. What do you mean by packaging? अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स को पैकेजिंग होना जरूरी है. बिजनेस है तो मीन्स ट्रेडिंग आएगा. सो ट्रेडिंग करते समय पैकेजिंग अगर अच्छे से नहीं है तो गुड्स कैन बी डिस्ट्रॉय. सो अ सुटेबल पैकिंग शुड बी देयर. सो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, शुड बी प्रॉपर डिजाइन. मीन्स ग्लास मटेरियल हम लोग को पैक करना है, सो विच टाइप ऑफ पैकिंग वी कैन यूज, ये सब होना जरूरी है. सो इसमें इट मीन्स पुटिंग गुड्स इन रैपर, कंटेनर्स एक्सेट्रा. पैकिंग क्यों करते हैं? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट. अगर हम लोग कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं सो उसमें गुड्स डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं. सो पैकिंग जरूरी है. Now
we will see what do you mean by manufacturing industries. These industries are concerned with the processing or transformation of raw materials and semi products into finished products. अभी मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग एक गुड्स से हम लोग दूसरा कुछ गुड्स अच्छा प्रोडक्ट बनाए, मतलब रॉ मटेरियल से वी आर मेकिंग अ फिनिश प्रोडक्ट और अ सेमी प्रोडक्ट. सो ये इंडस्ट्री मीन्स इट्स अ चेंजिंग शेप, इट्स अ चेंजिंग फॉर्म ऑफ द मटेरियल by genetic and extractive industries. Now what do you mean by genetic and extractive? That we will see further. Okay. What do you mean by trade? See, this chapter is little bit lengthy. I had make it very short. So please concentrate on this notes. It's a very important, मैंने बहुत important selection किया है notes का. So what do you mean by trade? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ट्रेड मतलब जहाँ पे हम लोग गुड्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड. मतलब खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं कमोडिटीज फॉर मनी. ऐसे हम लोग थोड़ी ना बस, इट्स नॉट अ चैरिटी, इट्स अ ट्रेड. मीन्स हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग दिस ट्रेड फॉर अ मनी. एक्सचेंज करते, वी आर डूइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में ये ट्रेड. नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड. फर्स्ट इज डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड मतलब क्या होता है कि दैट इज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. जो कुछ भी हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं एक ही कंट्री विद इन अ वन कंट्री बाउंड्री, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड. Domestic trade refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of one country. और इसमें क्या होता है, बोथ द बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू द सेम कंट्री. एक ही कंट्री के होते हैं बायर्स और सेलर्स दोनों भी. दैट इज नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड. और डोमेस्टिक ट्रेड इज आल्सो नोन एज होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड. और ये भी इसमें इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. So what is the two categories we will see. First is wholesale trade and second is retail trade. Wholesale नाम से हम लोग को मालूम पड़ता है that buying of goods in bulk. Okay, so it refers to buying of goods in bulk from manufacturer and selling them in a larger quantities to retailers and industrial use in relatively small quantities. Person engaged in wholesale trade are called wholesaler. अभी होलसेल ट्रेड मतलब क्या, गुड्स हम लोग बल्क में खरीदते, बहुत सारा इन लार्ज क्वांटिटी वी आर परचेसिंग द गुड्स एंड सेलिंग देम इन आल्सो इन अ लार्जर क्वांटिटी टू द रिटेलर्स या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग सेल करते हैं. और जो पर्सन इसमें जो डीलिंग करता है दे आर आल्सो नोन एज होलसेलर्स. रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड मीन्स व्हाट, इट रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर. होलसेलर से जो गुड्स खरीदते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज रिटेल ट्रेड. और जो पर्सन इसमें एंगेज्ड है दे आर नोन एज रिटेलर्स. होलसेलर्स he is engaged in wholesale trade and retailers are engaged in retail trade. Now first we have seen this different types of trade, that is first is domestic trade. Domestic is further divided into wholesale and retail trade. Next is foreign trade. What do you mean by foreign trade? Foreign trade नाम से मालूम पड़ता है that is between the different countries. सेलर और बायर हम अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं. और फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. और फॉरेन ट्रेड भी अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. दैट फर्स्ट इज इंपोर्ट ट्रेड. व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ट्रेड? इंपोर्ट ट्रेड मतलब purchasing goods from other countries. Goods and services if you are purchasing from other countries, they are known as import trade. For example, अगर हम लोग इंडिया से, इंडिया इज इम्पोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इराक, मतलब अगर हम लोग दूसरी कंट्री से इंडिया में कुछ ला रहे, दैट इज नोन एज इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज. दूसरे कंट्री को अगर हम लोग गुड्स बेच रहे, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड. अगर इंडिया इज एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इराक एंड ईरान, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रापोर्ट? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. फॉर एग्जाम्पल हियर इट विल कम इंडिया इज एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इराक एंड ईरान. मेक इट करेक्ट स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रापोर्ट?
इंट्रापोर्ट मतलब इट मीन्स परचेसिंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री, मतलब अगर एक कंट्री से हम लोग को परचेस कर रहे एंड वी आर सेलिंग देम टू सम अदर कंट्री, दैट इज नोन एज इंट्रापोर्ट. सी, it means purchasing goods and services from one or more countries with the purpose of exporting them to some other countries or countries. For example, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे some of the oil imported from Iraq and Bangladesh, मतलब अगर सपोज इंडिया कुछ खरीद रहा है एक कंट्री से और मोर देन वन कंट्री, एंड देन India is selling that product to some other country, one or more country, that is known as intraport trade. Okay, students? So we will stop here. Next we will continue next session. So till then, take care and goodbye, and please subscribe my channel. Bye bye.